Guys, we are going to talk about orbitals today. So before we understand what are orbitals, we need to know about the Bohr's model. This was around 100 years back when scientists were trying to know the structure of atom. तो तब Bohr had proposed this model. This gives us a very good idea about understanding the orbitals, about the structure of atom, although it's not very correct. तो होता क्या है कि देयर इज़ अ न्यूक्लियस इन बिटवीन एंड इलेक्ट्रॉन revolves around it like planets revolving around the sun. This is what Bohr had proposed. तो और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, तो जो पास में जो ऑर्बिट है और जो दूर में ऑर्बिट है, जो दूर ऑर्बिट है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी. ऐसा क्यों होता है कि दूर वाले ऑर्बिट के पास ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि तभी वो इतना दूर हो पाया. तभी आप देख लीजिए कि जो कूलम्स फोर्स है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स है, उसके अगेंस्ट वो इतना दूर रह पा रहा है इलेक्ट्रॉन. सो वो ज़्यादा एनर्जी होगी. तो हम इस तरह हम मतलब बोहर मॉडल तो ख़त्म हो गया. बोहर मॉडल मीन्स दैट electrons revolve around it. Although this is not very correct, it is not the electrons which are moving around it, it is the orbitals. What are the orbitals? It does not revolve around it, but in some area it does a random motion around it. तो पहले हम हाइजनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें ऑर्बिटल्स और अच्छे से समझ में आएगा. तो क्या है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ऑब्ज़र्व करते हैं, सो इफ़ यू ऑब्ज़र्व एनीथिंग अराउंड यू, व्हाट हैपन्स इज़ लाइट first gets reflected through that object and comes to your eyes, and then you are able to understand how the object looks like, where the object is, what is the position of the object, and whether the object is in motion or not. तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के आपकी आंखों में जाती है, तब आपको पता लगता है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या मोमेंटम है. सब कुछ आपको पता चलता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है. तो जब हम कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को पता करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, और तो लाइट जब इलेक्ट्रॉन पे टकराती है और हमें वापस मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसको मोमेंटम मिल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसका बहुत ही नेग्लिजिबल सा मास है. तो अगर फोटॉन्स, जो लाइट के फोटॉन्स है, उस पर टकराएंगे तो उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी. इसी वजह से हम कहते हैं कि हम बहुत सर्टेनली नहीं बता सकते हैं कि वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइज. हम केवल प्रोबेबिलिटी वाइज बता सकते हैं कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग. सो वंस अगेन आई विल रिपीट दैट when light strikes electron and comes back to us, when we are trying to observe an electron, so what happens is, due to the energy of light, the position of electron gets distorted. It might not be the same position where it lied initially. So that is why we cannot certainly say where the electron lies. So this is what Heisenberg's uncertainty principle is. There are two parameters in it. One is delta x, one is delta p. Delta x is the uncertainty in the position of an electron. Delta p is the uncertainty in the momentum of an electron. So what we say is that delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. H is the Planck's constant, and h upon 4 pi, sorry, this is not p, this is pi. So h upon 4 pi is equal to 0.527 into 10 raised to the minus 34 joule second. So what is happening is, if we increase the uncertainty of delta x, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी हैं, ये अनसर्टेनिटी हैं दोनों चीज़ों की. तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी को बहुत कम कर दें, तो यानी कि डेल्टा पी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. इसी तरह अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कम कर दें, तो डेल्टा एक्स बहुत बढ़ जाएगा. तो यही है कि
आप या तो डेल्टा एक्स को बहुत कम कर दीजिए, पोजीशन को बहुत क्लोजली अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो अगर आप इफ़ डेल्टा एक्स डिक्रीजेज then delta p will increase, and similarly if delta p decreases, delta x will increase. Hence what we say is position of an electron around the nucleus cannot be certainly determined. And if you have to write a definition of Heisenberg's uncertainty principle, then we simply say that the multiplication of the uncertainty in position and the momentum gives us this value, and we cannot, if the uncertainty in one is decreased, the uncertainty in the other is increased, and hence the position of an electron cannot be certainly determined. So what are orbitals now? Now orbitals are energy shells where the chances of finding of electron are high. So if we go back to Bohr model, and supposing this is not an orbital, a shell would be like a sphere which is around it. Although orbitals have different shapes, they might be dumbbell shape, they might have sphere shape. So what happens is, around these are the orbitals, around which are the orbitals. So what happens is, the electrons which are out in the outer orbital will have higher energy, electrons which are in the lower orbitals have lower energy. So at the moment you just need to understand, this is just the introduction, we'll go further and further. So the orbitals which lie away from the nucleus have higher energy as compared to the ones which are which lie close to them, and shape of the orbitals can be sphere shaped or dumbbell shaped. Okay, so that's all from today's video guys. Thanks a lot, keep watching, all the best.